ڈائمنڈ اسکول کے علی جناب پروفیسر علی سر یہاں پر تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کروں گا، گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ بچوں کے سرٹیفکیٹ اسی پروگرام میں تقسیم کیے گئے تھے اور کچھ ڈائمنڈ اسکول کے حوالے سے علی سر یہاں پر بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ان محفلوں میں اگر ان چیزوں کا حصہ لگ جائے تو وہ بھی مزید برکتوں والی ہو جایا کرتی ہیں. تو میں علی سر کے حوالے اب یہاں سے مائک کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے. یہاں سے پندرہ منٹ ٹوٹل لگیں گے علی سر کے اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے، اور اس سب کی جو ترتیب ہے وہ علی سر کے ہی ذمہ ہوگی. ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیے آپ اسکول کے ڈائمنڈ اسکول کے سب بچے بھی آئے ہوئے ہیں. اب اگلی کارروائی جو ہے تو علی سر کی سپرد کی جاتی. کچھ لوگوں کی یہاں پر بہت زیادہ ہم لوگوں کو اصرار تھا کہ بھائی ہم لوگ کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے، یعنی کسی ضروری کام یا پھر ایسا کوئی ریزن، کیونکہ آج ہماری ایک مسجد کا افتتاح بھی تھا تو کچھ لوگوں نے وہ بھی ریزن دیا ہے، تو صرف اور صرف 10 منٹ، یعنی یہاں علی سر کا پروگرام ختم ہوا وہاں پھر سے ٹوکن جو ہے پھر سے بند کر دیے جائیں گے. تو صرف اور صرف اتنی دیر کے لیے وہاں پر دوبارہ عمرے کا جو ٹوکن دیا جا رہا ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اگر کسی نے نہیں بھرا ہے تو وہ وہاں سے بھر لے، مگر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں پروگرام کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. چپ چاپ آپ آرام سے وہاں جائے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائے، وہاں ٹوکن بھرے اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے. سبھی سے گزارش ہے اگر آپ نے ٹوکن نہیں بھرا ہے تو آپ یہ پروگرام ہونے تک ٹوکن وہاں پر بھر لیں. جی علی سر. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. All praise is due to Allah, the most beneficent and the most merciful. We praise the Almighty Allah and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evils of ourselves and the mischief of our deeds. Whomsoever Allah guides cannot be misguided, and whomsoever Allah misguides cannot be guided. Peace and blessings be upon the final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon his family and his noble companions. Ameen. I am Fatima Sayyed, a grade 5th student and a computer teacher of Diamond International School. So first of all, I wish you a very happy month of Rabiul Awwal. So first of all, I will give you a brief introduction of our Diamond International School. Our school was started in the year 2022 with the blessings of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Huzur Waspak Rahmatullah alai, by the founder Professor Asghar Ali. So initially we had 7 students. In the second year we have 8 students. In the third year we had 60 students, and Alhamdulillah this year we have 75 students. So before we start our program, let me grab this opportunity to read Naat Sharif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We love you, O Prophet, we love you so, the best of creation, this we know. Your light is shining bright and true. We send our peace and love to you. We love you, O Prophet, we love you so, the best of creation, this we know. Your light is shining bright and true. We send our peace and love to you. You are honest, they call you the true. You are so kind in all that you would do. You are honest, they call you the true. You are so kind in all that you would do. You played with children, you helped the poor. Your goodness we always adore for sure. We love you, O Prophet, we love you so, the best of creation, this we know. Your light is shining bright and true. We send our peace and love to you. You taught us to pray, to be good and there, to seek knowledge if it is from China there. You taught us to pray, to be good and there, to seek knowledge if it is from China there. To respect our parents, to always be fair,
to remember Allah everywhere. We love you, O Prophet, we love you so, the best of creation, this we know. Your light is shining bright and true. We send our peace and love to you. The birds and the trees, they knew your name. The love for you they did proclaim. The birds and the trees, they knew your name. The love for you they did proclaim. We try to be good, to follow your light, to make our actions pure and right. We love you, O Prophet, we love you so, the best of creation, this we know. Your light is shining bright and true. We send our peace and love to you. Your light is shining bright and true. We send our peace and love to you. Now let's start our program. So first of all, I will call our grade 2 student Faizan to come here and tell the miracle of our holy prophet, the splitting of the moon. सरकार का जो मौजज़ा था जब आपने अपनी उंगली से चांद को शक कर दिया था, इस मौजज़े के बारे में फैज़ान आपको आके बताएंगे. Yes, Faizan, he is only a grade 2 student of our school, and inshallah he will tell the entire miracle in English. Inshallah, please be patient. अब नहीं भी समझ में आ रहा आप तो please सुभान अल्लाह बोलिए. बच्चा छोटा है, encourage कीजिए please. Yes. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. I am Faizan Khan, a grade 2 student of Diamond International School. Miracle of the Holy Prophet, the splitting of the moon. One night, some people who didn't in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam challenged him, saying, "If you are truly a prophet, split the moon in two." The Prophet sallallahu alaihi wasallam raised his hand and made a supplication to Allah, and right before everyone's eyes, the moon split into two perfect halves. The two pieces were so separate that people could even see the mountain between them. After a moment, it joined back together. Lesson for us: Allah's power is limitless. He controls the entire universe and can do anything to support this beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. MashaAllah. Now I call Muhammad Mustafa, a grade 2 student of Diamond International School, to come here and tell us the miracle of the crying tree trunk. सरकार का वो मौजज़ा जब एक खजूर का तना आपकी जुदाई में रोने लगा था, इस मौजज़े के बारे में मुस्तफ़ा आके इंग्लिश में बताएंगे. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Mustafa, a grade 2 student of Diamond International School. Miracles of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The crying tree trunk. Before the Masjid Nabawi had a pulpit, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would lead against a dead palm tree trunk to give his sermon. When a proper pulpit was built, he started using that instead. One day, suddenly, everyone in the Masjid Nabawi heard a sad crying sound. It was the tree trunk missing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went over and hugged the trunk to comfort it until it stopped crying. Lesson for us: this shows us how much even Nature love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It teaches us to have deep love and respect for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our own hearts. Thank you. MashaAllah. Now I call Hussein Raza to come here and deliver a speech on Miladun Nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Hussain Raza, a grade 2 student of Diamond International School. Miladun Nabi, also called as Maulid, is the birthday of Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. This day is not just about festivities; it is a day to remember his magnificent life and his beautiful message. The Holy Prophet was sent as a mercy to our world. He taught us the values of truth,
kindness, patience, and compassion. He showed us how to be good to our parent, kind to our neighbor, respect to our elder, and loving towards all creatures of Allah. He was a perfect example of honesty and trust. People called our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam as as-Sadiq and al-Amin. On his breast day, let us make a promise. Let us promise to follow his sunnah in our daily life, spread love and peace wherever we go, and to hold on to the rope of Islam. Thank you and jazakumullahu khairan. MashaAllah. Now I call Saad and Abu Bakr, both the students of grade 1, to come here and do question and answering. Assalamu alaikum. What's the name of our holy prophet? Our prophet name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What's the name of our prophet father? Our prophet father name is Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu. What's the name of our prophet mother? Our prophet mother name is Amina radhiyallahu anha. When is the birthday of our prophet? Our prophet birthday is on 12 Rabiul Awwal. Which is the birthplace of our prophet? The birthplace of our prophet is Makkah Mukarramah. Which is the resting place of our prophet? The resting place of our prophet is Madinah Munawwara. MashaAllah, well done. MashaAllah. Now I call Almir, a grade 1 student of Diamond International School, to come here and tell us the teachings of our holy prophet. Yes, Almir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I am Almir, a grade 1 student of Diamond International School. The teachings of our holy prophet are as follows: be kind to your families, neighbors, and even animals. Subhanallah, Subhanallah, Always speak the truth. Subhanallah, Be brave and stand up for what is right. Subhanallah, Share with others and help the poor. Subhanallah. Believe in and love one God who is Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. MashaAllah. Now I call Zainab to come and explain the meaning of Quranic verse number 107, chapter number 21, Surah Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yes, Zainab, please come. A grade 1 student from Diamond International School. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I am Zainab. I am grade first student of Diamond International School. And we have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the world. Subhanallah. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mercy was not limited to just his ummah. It extends all of creation, all generations, all places, and to all creatures. I love my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam more than toys, Subhanallah, 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 and even my parents. Subhanallah, 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 MashaAllah. Take. To speak to. MashaAllah. Now I call the founder of Diamond International School
to come and speak to the audience. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वो नाचीज़ हूँ प्रोफेसर सैयद अली असगर रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 4 साल पहले जो है इस इदारे को कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक के जो है नाम से जो है हमने बिस्मिल्लाह करके उसको शुरू किया था। माशाल्लाह उनकी बरकतें आप देख रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे पास 75 स्टूडेंट्स हैं। अभी ये जो तलबा है अभी बस फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, और हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इनको यहाँ पे दे रहे हैं। तो थोड़ा ब्रीफ में जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे इधर जो है किस तरह से पढ़ाई की जा रही है, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको आगे चल के कुछ भी करना है। अगर आपको बच्चे को यूपीएससी क्लियर करवाना है, एमपीएससी क्लियर करवाना है, या फिर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वट एवर यू वांट टू डू, बट द बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसी को कॉमेंट किया था और इस बार भी मैं इसी को कॉमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक एजुकेशन अगर बच्चों का स्ट्रांग रहा तो डेफिनेटली आगे चल के JEE बोलिए, नीट बोलिए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलिए, दे बिकम ईजी फॉर देम। अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर बच्चे को आगे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाएगा, आप कहीं भी भेजो उसको। तो इसलिए यहाँ पे हम माशाल्लाह हम लोग जो है 4 दिन जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, और हर फ्राइडे जो है रिवीजन लेते हैं, और उसके बाद में हर सैटरडे जो है हम एग्ज़ाम लेते हैं। एवरी सैटरडे, I repeat, every Saturday, not once in a 3 months or once in 4 months, इस तरह से नहीं है। Every week, every Saturday we conduct test, और उस टेस्ट में हम बच्चों को encourage करने के लिए टॉप 3 रैंकर्स को जो है प्राइज़ भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल से ही दें। तो माशाल्लाह उसमें काफ़ी जो है बच्चों का encouragement भी होता है, बच्चे जो है इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं, फिर ट्यूशन्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद प्रोफेसर हूँ, मैं JEE की जो है क्लासेस लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चों का बेसिक वीक होता है, तो ये इनिशियल एज में अगर बच्चों का अगर बेसिक स्ट्रांग रहा तो इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम्स को जो है काफ़ी आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारी तरतीब है, और इस साल से जो है माशाल्लाह वी आर ऑफरिंग कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, दैट इज़ कॉन्ग्रीगेशनल जोहर प्रेयर इन अवर स्कूल इटसेल्फ। यानी दुनियाई तालीम के साथ में जो है हम बच्चों को दीनी तालीम भी हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इमामत में जो बच्चे जो है वहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ भी जो है अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद में तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़ते हैं। तस्बीह फ़ातिमा के बाद में या करीमु या अल्लाह की तस्बीह भी पढ़ते हैं 100 मरतबा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और उसके मरतबा और अल्लाह के रसूल की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है क़ैलुल्लाह, जिसको जो रिसर्च है, जो साइंटिस्ट है, जो पढ़े लिखे लोगों ने उन्होंने इतना उसको बयान किया कि हम लोग की अक्ल जो हैरान हो गई कि हमको तो इतनी आसानी से मिला वो चीज़ और हम उस पर अमल नहीं कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल में उसको हम अमल भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, मैं खुद वहाँ पे सोता हूँ और 10 मिनट जो है हम वहाँ पे ज़ोहर की लंच होता है उनका, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा होती है, फिर ये तस्बीह के बाद में जो है 10-15 मिनट हम वहाँ पे आराम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली लाइक रेजुविनेटिंग आवर बॉडी, माइंड एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ इतनी अच्छी है कैलुल्लाह जो है, तो ये बच्चों को अगर इनिशियल एज से अगर ये सिखाया जाए तो इंशाल्लाह जो है वो उनके लाइफ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा कोई चीज़ का बर्डन भी नहीं रहेगा और वो अपनी लाइफ को जो है बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बस मैं इस स्टेज से आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ये चाह रहा है कि भाई मेरे बच्चे को जो है दीनी और दुनियाई दोनों तालीम एक इदारे में मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला ने डायमंड इंटरनेशनल स्कूल का जो है अमरावती में खिताब करवा दिया। तो माशाल्लाह यहाँ पे आपके बच्चों की दीनी और दुनियाई दोनों तालीम की जो है यहाँ पे हम तवज्जो करें, और उसके साथ में हम तरबियत का भी हम ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी स्कूल्स में जो बच्चे छुरी लेके जाते हैं, छुरी लेके जो दूसरों को डराने जाते हैं, गन लेके जा रहे हैं दूसरों को डराने के लिए, ऐसा हमारा माहौल हो रहा है। तो यहाँ पे हम तरबियत भी जो है बच्चों को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात है, मैं और एक गैर मुस्लिम था, हम दोनों जो है हम लोग जैसे ही हम क्लास के नीचे जैसे ही हम पहुँचे, बरसात का वक्त था, बरसात का मौसम ही था, तो 2 लड़कियां जो है ऊपर क्लासरूम से जो कैमरा में देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि हम दोनों जो है बगैर अम्ब्रेला के हैं। जैसे हमने कार से निकला, बस कार से क्लास में जाने का बस फासला जो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 100 मीटर्स होगा बस, मगर वो लड़कियां फिर भी जो है ऊपर से नीचे उतरी, 2 लड़कियां 2 अम्ब्रेलास लेके, और एक अम्ब्रेला हम दोनों लेक्चरर्स को दे दी और एक अम्ब्रेला में जो वो दोनों चली गई। देखिए क्या तरबियत है लोग की। गैर मुस्लिम लड़की, हम लोग जैसे नीचे आ गए वो नीचे आ गए। और इसी तरह से हमारे बच्चों में भी जो है हम एजुकेशन, ये चीज़ों के साथ में तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जो अभी हो रहा है कि मुग़लों की जो हिस्ट्री है उसको बंद किया जा रहा है।
خالی ان کو. مگر انشاءاللہ ہم ڈریں گے نہیں, ہم ہماری اسکول میں جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کو بھی ہم پڑھائیں گے, اور وہ کس طرح سے جو ہے جسٹس کے ساتھ میں انہوں نے رول کیا یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ہم انشاءاللہ کسی سے نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. اس مبارک پاک محفل میں ہم کافی بزرگ بھی ہیں, تو اتنی بڑی محفل ہے انشاءاللہ, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کے لیے دعا فرمائیں, اور ہمارے اسکول میں جو بھی طلبہ جو ہے ایجوکیشن حاصل کرے اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور دنیائی کامیابی عطا کرے. So finally I close my speech by saying thanks to especially Mr. Faizan and his entire organizing committee for giving this opportunity to present our views of our school. And last but not the least, I say thanks to all the audience who were watching our students doing our act very patiently. So thanks to one and all. Thank you very much. Jazakallah khair. माशाल्लाह. Now here we can end our program. اور میں علی سر سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو سید صاحب کے پاس لے کر جائے تاکہ بچوں کو ان کی دعائیں بھی ملیں اور ایک چھوٹا سا تحفہ. اور وہیں پر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کام یہ اسکول کر رہی ہے, جو ابھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں مل رہی ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میڈل بھی دے دو بچوں کو. یہ سبھی بچوں کو بھی ہم لوگ رات تک کے رکا نہیں سکتے کیونکہ کافی وقت ہو جائے گا اور چھوٹے بچے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بچوں کو سرٹیفکیٹ اور دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے. ایک خاص اعلان یہ ہے کہ عمرہ کا جو ڈرا ہے, یہاں جن لوگوں نے ڈرا ڈالا ہے, اگر وہاں پر بھی جو ڈرا آئے ہیں میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں وہ ڈرا سارے اسی پیٹی میں لا کر ڈال دیں. ڈرا کے وقت جس کی چٹھی نکلے گی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے اپنا نام موبائل نمبر لکھ کر ڈالا ہے, اس کے علاوہ ایک ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہے. ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہے, اس ٹوکن نمبر نام کے ذریعے اعلان ہوگا. جو یہاں حاضر ہوگا, 3 بار اعلان کیا جائے گا, جو یہاں حاضر ہوگا اسی کو عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا. اب کسی نے یہاں بھر لیا ٹوکن, اب چلو میں اپنے کاروبار کی طرف نکل جاتا ہوں یا اپنے دیگر مصروف